Hello guys, so welcome to the next video. Okay, so today we will discuss about another phenomenon of light, that is refraction. Okay, तो रिफ्रैक्शन क्या है वो डिस्कस करते हैं हम. ओके, तो लेट्स से हम मान लेते हैं हमारे पास दो मीडियम है. यहाँ पे देख सकते हैं आप पीडीएफ में. यू कैन सी इन द पीडीएफ दैट या यू कैन सी इन द पीडीएफ दैट there are two mediums. Okay, so first medium is air. Okay, and the second medium is glass. So in this phenomenon, when light travels from one medium to another medium, right? Here light is traveling from air to glass. Yes, then after entering the second medium or after entering the another medium, the light changes its path. Okay, that phenomenon is called refraction. Okay, तो यहाँ पे क्या हुआ, लाइट एयर से आ रहा है, लाइट एयर से आ रहा है, एयर से आके ग्लास पे एंटर किया. ओके, लाइट इज एंटरिंग इन द ग्लास. सो व्हाइल एंटरिंग इन द ग्लास, you can see the light has changes its path. Okay, it is coming like this, and after reflection it has changes its path. Okay, then again when light is coming from glass and after entering the air again, ग्लास से अगर फिर से एयर में जब एंटर किया तो क्या हुआ, फिर से इसने पाथ चेंज कर दिया. ओके, so this phenomenon is called reflection. Okay, so here we'll get two words. First word is rarer medium and another word is denser medium. So comparing two mediums, like here we have air and glass. यहाँ पे हमारे पास दो मीडियम है. ओके, दोनों मीडियम में से जिसमें लाइट का स्पीड और वेलोसिटी, लाइट का स्पीड ज्यादा होगा. Okay, that medium is called rarer medium. Okay, since and another medium where the speed of light is less than the other medium. Okay, यहाँ पे ग्लास में क्या होगा, ग्लास में लाइट का स्पीड कम होगा कंपेयर टू एयर. सो that's why here air is rarer medium, यहाँ पे लाइट का स्पीड ज्यादा होगा, and glass is denser medium, यहाँ पे लाइट का स्पीड कंपेयर टू एयर कम. That's why it is called denser medium. And air, here air is called rarer medium. Okay, so remember, and this is the interface between two mediums. Okay, this is medium 1, air is medium 1, and glass is medium 2. Okay, air is medium 1, glass is medium 2. Done. And if we draw a normal or a perpendicular on the interface, we call it as a normal. Okay, like in the phenomenon of reflection. Okay, so when light enters from rarer medium to denser medium, क्या होता है, लाइट का पाथ जो चेंज होता है वो लाइट का पाथ नॉर्मल के पास आ जाता है. ओके, यहाँ पे यू कैन सी हियर when light is entering from rarer medium, from air to denser medium to glass, light has come towards the normal. Okay, and when light is going from denser medium to, when light is going from denser medium to rarer medium. Okay, here glass is denser, air is rarer medium. Okay, so when light is going from denser to rarer medium, it is going away from the normal. Okay, away from the normal. So remember, when so remember, from नोट कर लेना, from rarer to denser, and remember this ray is called, this the जो रे इंसिडेंट हो रहा है, this the incident ray is, this is incident ray, and the ray incident ray which is making angle with normal, जो इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है वो होगा इंसिडेंट एंगल. ओके, एंड जो
जो रे बाहर आ रहा है आफ्टर इंसिडेंट, जो रे सेकंड मीडियम में एंटर कर रहा है, इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। ओके, रिफ्रैक्टेड रे। एंड रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा वो होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, सो व्हेन when light travels from rarer to denser, incident angle is greater than refracted angle. Okay, and when from denser to rarer, here light is entering from glass to air. So here when denser to rarer, angle I is less than angle R. Okay, remember these points. Okay, then uh, like reflection, we have two laws. Okay, so first law is incident ray. You can see first law, the incident ray, refracted ray, and the normal lie in the same plane. एक ही प्लेन में है ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल एक ही प्लेन में है, lie in the same plane. Second law is second law is a special law. Like when we take let's say let's consider air as a medium 1 and glass as a medium 2. Okay, forgot this. Okay, नीचे का part भूल जाओ. So when light, okay, so when we take sine of incident angle to the sine of refracted angle, this is incident angle, this is refracted angle. Okay, sine of incident angle to the sine of refracted angle. Okay, then we will get the refractive index. Refractive index is a term, refractive index of the medium 2. Okay, that is called Snell's law. Okay, ratio of sine of incident to the sine of refraction angle is a constant. And always remember, for a medium, refracted index is always constant. Like for air, it is always constant. It is 1. For glass, it is always 1.5. Okay, so this is constant. Okay, and when we will take the ratio of sine of angle incident angle to the sine of refracted angle, we will get the refractive index of the medium to second medium. Okay, done. So here we have given some values. Remember these values. Okay, refractive index refractive index can be measured by this formula also. Okay, c is the velocity of light, and v हमें जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए उस मीडियम में लाइट का स्पीड जो होगा, लाइट का वेलोसिटी जो होगा. ओके, डन. लाइट का वेलोसिटी जो होगा उस मीडियम में वो है v. उसका रेशियो लेने से उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा. डन. ओके, सो let's discuss about two instruments. Okay, two optical instruments where we get the refraction for phenomenon. Okay, so this is called lens. Okay, we'll get refraction formula in lens. Okay, like mirror की तरह lens का भी we get two type of lenses. Converging lens, this is called converging lens, is also called convex. Diverging is called concave. ये उल्टा है, मिरर का उल्टा है ये. रिमेंबर, जिसका पेट बाहर होगा वो होगा कन्वेक्स, और कन्वर्जिंग मिरर ये लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है. दिस इज फोकस. ओके, दिस पॉइंट इज फोकस एंड दिस इज ऑप्टिकल सेंटर. लेंस का जो सेंटर होगा वो ऑप्टिकल सेंटर. ओके, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा फोकल लेंथ. ओके, डन. सिमी जिस लेंस का पेट अंदर अंदर होगा, that lens is called diverging or concave lens. Okay,
मिरर में क्या होता था, कनकेव मिरर कन्वर्स करता था, कन्वेक्स मिरर डाइवर्स करता था। यहाँ पे क्या होगा, कन्वेक्स लेंस कन्वर्स करेगा, कॉनकेव कॉनकेव लेंस, सॉरी, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्स करेगा, कॉनकेव लेंस डाइवर्स करेगा। और यहाँ पे अगर वी एक्सटेंड दिस diverging rays to a point, then this point is called focus, and this is the focal length, and this is the center of the lens is called optical center. Okay, optical center. Distance to the optical center to the focus is called focal length. Okay, then, similarly for lens, we'll get a formula called mirror formula. Okay, already we have discussed v is the image distance. Agar, if you don't know, then see the video of reflection. Okay, वहां पे मैंने ये सब डिफाइन कर दिया है। ओके, v क्या है, u क्या है। v इज द इमेज डिस्टेंस, u is the object distance, f is the focal length, as I have discussed here. Okay, so the formula is 1 by f equals to 1 by v minus 1 by u. Okay, उल्टा है, मिरर मिरर का 1 by v प्लस 1 by u इक्वल्स टू 1 by f था, इसका 1 by v माइनस 1 by u इक्वल्स टू 1 by f, उल्टा है, लेंस में माइनस, मिरर में प्लस। ओके, then there is a word called magnification. Magnification is the simple word like when we see a object to a, or when when lens makes a image of a of of any kind of object, okay, then वो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा होगा, कितना उसका साइज, ऑब्जेक्ट इमेज का साइज कितना बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से, ओके, कितना मैग्नीफाई होगा। ओके, well, that word is called magnification, and magnification is measured by this formula. Okay, m equals to h dash by h equals to v by u. h dash क्या होगा, इमेज का हाइट होगा, the height of the image, which, and h will be height of the object, जो ऑब्जेक्ट लेंगे हम उसका हाइट, and h dash is the height of the height of the image, and value of m will be magnification of the image. ओके, मैग्निफिकेशन बाय द लेंस, वो लेंस कितना मैग्नीफाई करेगा ऑब्जेक्ट को। ओके, एंड वी एंड यू इज ऑलरेडी डिस्कस, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, देन देन ओके, वेट, ओके, सो या, ओके, so then there is a word called power, like as you can see, I have who I am wearing a spectacles, I am wearing spectacles. Okay, मैं spectacles पहन रहा हूँ, तो क्यों पहन रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देता, I can't see properly. Okay, and that's the problem of my eye. Okay, so to cure this, we have to use lenses. Okay, we, as I said, this is a disease, ये एक बीमारी है, तो इसको बोल, one disease is called myopia. Okay, myopia is which, जहाँ पे हमको दूर का चीज नहीं दिख, we can see near things, can't see properly far things. Okay, and second one is hypermetropia. Okay, hypermetropia is like opposite to myopia. Okay, we can't see near objects. Okay, हम पास के चीज को अच्छे से नहीं देख पाते। Okay, so that's why to cure these diseases we have to use lenses in the form of spectacles. Okay, no? Okay, so to cure myopia, we use concave lens. Okay, always remember, to cure myopia, we use concave lens, and to cure hypermetropia, we use convex lens. Okay, that's why, see these points. Okay, see these points. Power of convex lens is positive. So if you see, अगर आप देखेंगे कि
लाइक जिसको मायोपिया है उसको आपको उसके चश्मे का पावर पूछेंगे तो वो बोलेगा माइनस समथिंग, बिकॉज व्हाई, उसका बीमारी है मायोपिया एंड ही और शी इज यूजिंग concave lens. Okay, concave lens, power of concave lens is negative. Okay, and हाइपर जिसका हाइपरमेट्रोपिया है, लाइक नॉर्मली बड़े लोगों का होता है, ओके, मम्मी पापा है, उन लोगों का होता है, तो उन्हें पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि तुम्हारे ग्लासेस का पावर क्या है, तो वो बोलेंगे कि प्लस समथिंग, पॉजिटिव समथिंग, ओके, right? Because they are suffering from hypermetropia, and to to cure hypermetropia, they have to use convex lens, and power of convex lens is always positive. That's why it is called plus something. Okay. Now let's come to power. हम पावर निकाल ले कैसे? पावर पावर तो कर रहे हैं, लेकिन पावर निकाल ले कैसे? Okay. तो पावर निकालने के लिए the lens which is which has been used, okay, जो लेंस यूज कर रहे हैं उस लेंस का फोकल लेंथ क्या होना चाहिए? ओके, फोकल लेंथ, वी हैव टू नो द फोकल लेंथ, एफ एम एफ शुड बी इन मीटर्स, द यूनिट शुड बी meter, since focal length is a length, so we will get something, okay, and we can convert the value to meter. Yes, we have to convert this to meter. Focal length should be converted to meter, so to calculate power, we have to change focal length to meter. Okay, always remember, while calculating the power of a glass or spectacle, you have to change the focal length to the meter. Okay, then take the reciprocal of the value. After converting the value of focal length to meter, take the reciprocal of the focal length, you will get the power of the lens. If it's convex lens, then power will be positive. If it is concave lens, power will be negative. Okay, done. And the unit of power is always diopter. Unit of power is always diopter, and it is denoted by capital D. F is in meters. यहाँ पे लिखा हुआ है. Okay, done. So these are some quick tips. एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो. ओके, रियल इमेज का क्या होता है? ऑलवेज इन्वर्टेड कैन बी कैप्चर्ड ऑन अ स्क्रीन. वर्चुअल इमेज ऑलवेज डायरेक्ट, सीधा होता है, उल्टा नहीं होता है. रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है. तो क्या बोल सकते हैं हम प्लेन मिरर में अपने आप को जब देखते हैं तो वो इमेज क्या होता है? वो इमेज ऑलवेज वर्चुअल होता है, क्योंकि हम तो अब उल्टा नहीं देखते ना, हम अपने को देखो, हम हमेशा सीधा देखते हैं. दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज. ओके, देन स्पेशल केस कन्वेक्स मिरर, concave lens, या always virtual, erect and diminished. Remember this. Okay. Okay. You cannot, ये याद रखना, तुम्हारा आंसर कभी रियल एंड इरेक्ट नहीं हो सकता. रियल एंड इन्वर्टेड होगा ऑलवेज. रियल एंड इरेक्ट is a wrong answer. Okay, done. Next, this is the images formed by the concave lenses. Important image, important pictures. Okay, I have discussed in the video of reflection. वहाँ पे मैंने डिस्कस किया है, तो ये सब देख लेना. ओके, ओके, डन. थैंक यू. तो होप यू गॉट दिस थिंग्स. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके, थैंक यू.